चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं पीसी होटल में, जहाँ पर टर्क आपी एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद किया गया है। ये एक्सपो लाहौर समेत फैसलाबाद और इस्लामाबाद में भी होगा। 31 मई तक की इनकी डेट्स भी हैं। तो आइए यहाँ पे जो मौजूद रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने डिस्काउंट्स हैं और कौन से उनको प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. How are you? I'm fine. How are you? Thank you. I'm fine too. So how is your experience going on over here? Actually, first of all, Khushamdeen to Lahore Expo. And as we are representing Üsküdar University in Turkapı's Education Expo, actually this is really cool right now. Most of the students are looking for master's program here. Also, we do offer like bachelor's program and also master's program. But most of the engineering programs in master's program that we offer are in English. So that's why Pakistani students would prefer our university's master's program. Also, we do have like in bachelor's program we do have English programs. So we are telling our students, the prospective students, about our university. And it's a short about our university. We are located in Istanbul, and we are the first thematic university of Turkey, and we known by our medicine faculty, dentistry faculty, and psychology departments, and the remaining engineering faculties. We do have 3 different hospitals, so that's why we are actually offering medical, and the dentistry programs to our prospective students. So, what sort of footfall are you just imagining that the students are going to come and visit over here at your stall? Actually, the main purpose of studying in Turkey, actually we are a step to Europe. All of the Turkish universities' diplomas are valid in whole European countries because we are giving blue diploma to our graduate students. So for educational purposes like academic career or work purposes, our students can go to Europe for either work or to academic career. So it's a really good opportunity to go to Turkey because our cultures are kind of same. They are not going to a different, like really different country. They are coming to Turkey. You watch Turkish series. You are familiar with Turkey, and actually it's a really good opportunity to study in Turkey and after that continue their careers in Europe. So it's a really good opportunity. So actually I hope all of the Pakistani students will benefit from this opportunity. So what sort of possibilities are you offering the Pakistani students over there in Turkey? Actually, we do offer like dormitory options, like accommodation, and like as Üsküdar University, we do have like free shuttle buses that you can travel all around the Asian part because Üsküdar University is located in Asian part of Istanbul, and the Asian part is cheaper, calmer, and greener city than the European part because European part is kind of mess. Actually, you have to stay in the Asian part and you have to travel the European part. So, because of our university located in the Asian part, Pakistani students will stay in the Asian part really easily. We do have like 5 different dormitories that we have agreement with. They are private dormitories. They are really cool, and we are offering these dormitories to our students. And also, we do have in Üsküdar University's own, we do have accommodation supporter, and actually, we will help Pakistani students to find a rent. So because in Istanbul actually there are lots of crises about rent, but as Üsküdar University we are helping students to find a rent. So we are directly talking with the agencies or the rental things. So we are dealing with it, and also we are offering like practical courses in the engineering parts. So we do have more than 70 different laboratories. So like in the practical course, in the theoretical part, in the theoretical class, they will learn the theoretical part of the lecture, and in the laboratory, they will use the practical part in the laboratory. So we do offer more than 70 different laboratories. Well, thank you so much. Do you want to give any message to the students? Yes, of course. If you watch this, please, and if you watch right now, you can come to the PC Continental, Tapir Continental Lahore, and you can get the detailed information about Turkish universities, and mostly Üsküdar University. Or if you wish, you can directly contact with Turkapı Education, and they will actually inform you about Turkish universities and how to study in Turkey, like required documents, scholarship options, and they will actually give you detailed information. Please contact them. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Are you from Turkey? I work with BAU Istanbul, Turkey though.
Oh, that sounds really nice. Okay, so tell us something about your university. What sort of program are you offering to the Pakistani students, and what possibilities do you think that they are going to get over there? Okay, so BAU Istanbul, Turkey is actually one of the best universities in Turkey. According to Times Quality Education ranking, we are ranked between 200 to 300 across the world. So the opportunities and the programs we're offering is actually at par with the international universities. We have more than 160 programs that are taught in English language, so there is no communication barrier, is that sort. And also, what I tell students, the plus of this university is it is actually a gateway to Europe with so many more opportunities being offered. Are you guys even offering them some short courses if they want to come for some diploma or something like that? We offer bachelor's degree, master's degree, and PhD programs only. Only there are no short courses. Or No short courses. They're proper degrees that we're offering at BAU University. It's an elite private university in Istanbul, and the degrees are actually recognized and accepted worldwide. So this is for the first time that you have come into this expo, or for the second time? Turkapi Expo, this is the first time, and I'm glad to be here. All right. So what sort of footfall are you just considering to be that you see that people should come over here? I think with so many other representations from other universities, and I think right now we have a lot of students are coming over, and I'm very glad to actually communicate with them, engage with them, and actually educate them about the opportunities being offered at BAU. So do you think that Turkey is more affordable? I think Turkey is right now the best option for the students in Pakistan. I think with Turkey opening its door towards the international students and the quality of education it is actually offering, right now Pakistani students have this as the best option possible for them. So do you think that students are not going to face any sort of like language barrier over there? Turkish universities has evolved for quite some time now. I think most of the universities that we have here are actually offering the courses in English language. So there is no communication barrier of that sort. Also, they have people from all over the world coming and teaching their students. Let's talk about BAU. We have experts coming from different fields and talking about these programs. We have managers and CEOs coming, and you have the opportunity to register yourself for the meetings with the people who have actually established their multi-billion-dollar companies from a basement or a garage are actually sitting in our campuses, and you can register yourself for the meetings with them. This is a tremendous opportunity for the students in Pakistan. They can go out and actually learn from the very best in their fields. So is there any message that you want to convey to the students? I'll say to everyone who is listening and who wants to actually go to abroad for their education studies, Turkey is right now the perfect option for them. And especially because I know more about Bahçeşehir University Istanbul, I can be confident when I tell you that this is one of the best places there is for you. There are so many opportunities being offered. We have programs ranging from business administration to medicine, pharmacy, dentistry. We have architecture. We are ranked #1 in all these programs. We are there to educate you and help you and guide you through the process. You can visit Turkapi if you're interested in these universities, and we'll be happy to have you at the campuses. Do you think एजुकेशनल एक्सपो ये जो टर्कापी ने एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि टर्की के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि टर्की में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और टर्की को एज अ यूरोप गेटवे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपो करवाने का यही मकसद है कि यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली हम पाकिस्तान लेके आ रहे हैं कि फैमिलीज़ और स्टूडेंट डायरेक्टली ये कि रिप्रेजेंटेटिव से बात करें और उनके जो क्वेश्चंस हैं स्टडी के हवाले से, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्टली ये है कि वो रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्ट हों और अपने ये है कि फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त मौजूद हैं वो सारे टर्की के हैं? जी, सब टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी ये है कि हमारे पास 8 यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं, तो हर यूनिवर्सिटी ने किसी ने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, किसी ने 2 भेजे। तो हम इंशाल्लाह आने वाले सालों में अगली जो हम नेक्स्ट एक्सपो करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हम टर्किश यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान लेके आएंगे इंशाल्लाह। और आपको क्या लगता है कि फ़ुटफॉल आप किस तरह का इमेजिन करो कि यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ी देर में स्टूडेंट्स का? बिकॉज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ये है कि अपने फाइनेंशली रीज़न की वजह से बाहर जाके क्वालिटी की एजुकेशन हासिल नहीं कर सके। तो इस एक्सपो का मकसद, टर्किश यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान में लाने का मकसद यही है कि एक बेहतर और मेयारी तालीम हर पाकिस्तानी तक पहुँच सके, और जिसका ये है कि ख्वाब है कि मैं इन फ्यूचर जाके किसी फ़ॉरेन कंट्री में पढ़ूँ, वहाँ से एजुकेशन
अपनी हासिल करके एक्सपीरियंस लेके वापस आके अपनी कंट्री को सर्व करूं। तो ये मेन हमारा मोटिव ये है कि हम पाकिस्तान को भी सर्व करें और इंटरनेशनली जगह पे हम एज ए पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी को एज ए रिप्रेजेंट करें कि पाकिस्तानी स्टेट के मतलब बताएं कि पाकिस्तान क्या है और इसकी अहमियत पूरे रीजन में क्या है। और स्टूडेंट्स को जो लैंग्वेज बैरियर के लिए जो फेस करना पड़ता है वहाँ पे जाके, जो कि ऑब्वियसली टर्किश हर किसी को आती नहीं है, तो कोई ऑल्टरनेट वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज है जो आप बोल सकते हो कि लोगों को समझ आ जाए टर्किश के अलावा? टर्किश के अलावा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, आपसे बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि लोकल मार्केट में डेफिनेटली आप जिस भी कंट्री में जाएंगे वहाँ पे लोकल चीज़ समझी जाएगी, ज़ुबान बोली जाएगी। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती भी है, लेकिन लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम जो पंजाब से हैं पंजाबी में बात करें, जो कराची वाले हैं वो कहते हैं उर्दू में बात करें। तो ये हर जगह का सेम ही है, लेकिन ये है कि टर्किश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 3 to 4 मंथ्स में ईज़िली आप टर्किश लैंग्वेज सीख सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कितना डिस्काउंट सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं कि जो लोग मतलब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या उनके लिए वो अफोर्डेबल है? यूनिवर्सिटीज़ टर्किश यूनिवर्सिटीज़ अफोर्डेबल हैं और टर्किश यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। कुछ तो इनिशियली ये है कि अभी हमारे रेफरेंस के ज़रिए जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे ऑन द स्पॉट उनका एडमिशन होगा, 30 to 50% उनकी ट्यूशन फ़ी में स्कॉलरशिप होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट वहाँ पे जाके अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तकरीबन 3.5 से उनका अबव CGPA हो, तो डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स होती हैं और स्टूडेंट कैन गेट ईजिली 100% स्कॉलरशिप। सो कोई मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स? मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि टर्की को चूज़ करें। टर्की में यह है कि स्टडी के लिए आएँ और हमारे ऑफिस तुर्की एजुकेशन लाहौर से रब्ता करें। इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स को मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और जो उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए बेहतर साबित होगी। थैंक यू सो मच इमरान भाई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।